साथियों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे एक और बार महामुकाबले में क्वार्टर फाइनल नंबर 1, जहां पर आपको नजर आ रही है दो बड़ी टीमें। एक तरफ राजस्थान की टीम है तो दूसरी तरफ रेलवेज की टीम है। डिफेंडिंग चैंपियंस आप कहना चाहेंगे। रेलवेज की टीम ने शुरुआत की है, पहला अंक वहां पर अर्जित किया है। और चलिए अब राहुल चौधरी यहां पर रेड लगाते हुए नजर आएंगे। और नवीन मेरे साथ मौजूद है। नवीन, कैसे है नवीन? क्वार्टर फाइनल 17 सीनियर नेशनल अहमदनगर, और जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, मुकाबला शुरू हो चुका है। Yeah, totally. I just did not realize there, but nevertheless, that's what kabaddi is all about. We just gone in and just come out there. Surinder Gill, running hand touch, attempt on that right corner. He's not got anything there. Yeah, it's a big moment here for the first qualifiers to happen. That's it. Yeah, as along with side on the KMP-YKS that's happened there from Yuva Kabaddi Series. This is Jai Bhagwan. He's a big prodigy of our own Yuva Kabaddi Series, isn't it? The Beam. That's what we call him. And there, Beam wants to go through. Ankle hold comes across. It's a multiple point raid as the umpires are counting men. That's not very good for the railways. It's a super raid. लीजिए नवीन, क्या शुरुआत है। जय भीम भगवान आप बातचीत ही कर रहे थे और जय भीम ने वो कार्य कर दिखलाया, जिस तरह से मिडलाइन को क्रॉस किया। हालांकि परवेज की जोड़ी वहां पर आपको नजर आती है इंडियन रेलवेज के, बट यहां पर पंकज मोहिते पॉइंट ले जाएंगे। थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए थे राइट कवर। करेक्ट। पंकज मोहिते is not trying to attack. The right cover came across in no time. Right corner there, in fact. Right. Wants to go for the angle, but not the right way. And now Rajasthan will attack in from Mahipal. What a big raid that was, I should say. Indian Railways. When you take that name, I'm just having my eyes on the team sheet. Right. Last 4-time champions, the Railways, the defending champions here. Last time they had beaten Maharashtra in the finals. And yeah, for the Railways, Sudhakar is not in the 7, but he is definitely there in the team. He is there on the bench. Stromy, he'll come now whenever the Railways need him. Gumnam Singh gets the bonus. Now Bheem comes back here, Rashid. जी हाँ, बिल्कुल। पिछली रेड में गुमान सिंह को एक अच्छा बोनस वहां पर मिला, तो जय भगवान जिन्होंने 3 पॉइंटर रेड के साथ शुरुआत की थी, सुपर रेड के साथ शुरुआत की थी। एक बार फिर से कॉर्नर टू कॉर्नर, जरूर हल्की सी सर पे चोट आई है, बट ये चोट इन्हें सीनियर नेशनल में प्रभावित कर देने से नहीं रोक सकती है। जय भीम ने अपने आप को एक्सेलरेट किया, लेफ्ट कॉर्नर का अटैक आया और क्या शानदार बचाया। अभिनीश नटराजन वहां पर मौजूद थे। नवीन, was that diving effort? Yes, you did explain everything there. And nothing much on that replay, but yeah, Jay is so big on that escape route. Yeah, look at this. He knows that the defender is coming towards him. A green card, right? Someone's getting that green card out there, and right, this will be Pankaj Moite coming in for Railways. It's so much so important that he has running hand touch on the right corner. He's got his man, I think. He uses the lobbies as well. Wonderful effort. And this is where Indian Railways are so relentless. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन हैंड टच। आप देखिए, लग रहा था कवर को अटैक करने जाएंगे, बट जाते जाते रनिंग हैंड टच के राइट कॉर्नर पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेच रहती है, वहां पर बहुत ही बढ़िया अटैक करते हैं वहां पर पंकज मोहिते। और जय भगवान पर रेड की जिम्मेदारियां आज पूरी तरह से नवीन। इस खिलाड़ी को हमने देखा युवा कबड्डी सीरीज का इनॉग्रल जहां एडिशन था, रावली एरोज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया था, मल्टीपल टाइम्स मल्टी फैसेटेड स्किल्स दर्शाई थी। बट अभिनीश नटराजन ने इस बार फ्रंटल ब्लॉक किया है, चेन में आए हैं नवीन, और यहां जय भगवान का शिकार किया गया है इंडियन रेलवेज की तरफ से। Yeah, from that left corner, he came across in a flash. I think that is Tyagarajan there on that moment. Wow, that's really good. Now, once again, Guman Singh as Rajasthan just losing their main raider. He will not probably try anything, Guman Singh. He will go back empty-handed. That's what it looks like. Yeah, he goes in deep in front of that right corner. Yeah, watch out. He's just coming around you and just goes back empty-handed. Nitin Kumar from that right corner wanted to just attack Guman. Nothing there.
और फिर भी अगर हम राजस्थान की बात करें, महिपाल एक अच्छे रेडर हैं, और नवीन हम कैसे भूल सकते हैं गंगाराम, ज्वालाराम गंगाराम, एक और ऐसे ऑलराउंडर Yeah, खिलाड़ी हैं जो बहुत ही बढ़िया रेड्स लगा सकते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी किक्स है, तो जहां पर भी राजस्थान को मौका मिलेगा उनका उपयोग करने का, मुझे लगता है नवीन बड़ी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि राइट कॉर्नर से जो अटैक आए वो बड़ा प्रबल है और बलशाली है। very much. And then the ankle hold, so important, and the cover from that left cover coming across on the support. Big ankle hold from Nitish Kumar on that right corner. As Pankaj Mohite now will just go in with the defense of four. He needs to have a touch point, but if he does not, the next raid will be a do or die raid for Indian Railways. That frontal double thigh hold, fabulous effort. Rajasthan have made sure with Gangaram, Jwalaram, they keep on doing what he does best. क्या शानदार इनकी पोजीशन से, इनके डिफेंडर के तौर पर राइट एंड से यहां पर बिल्कुल राइट टाइम पर वो अटैक किया, नितिन का अच्छा साथ आया और गंगाराम को पहला पॉइंट मिला है। क्या डबल थाइज पर वहां पर होल्ड किया था नवीन, बहुत ही प्रबल और बहुत ही शानदार डिफेंडर के तौर पर, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। और युवा कबड्डी सीरीज में हमने देखा है वर्चस्व बनाते हुए अभिनीश नटराजन भी एक कमाल के डिफेंडर है, बट इस बार राहुल चौधरी का रिवाइवल आ चुका था, तो राहुल चौधरी रेड पर गए और अंक ले आए। A couple of points. Again, from that left corner, it was not a way how you want to attack him. There, brilliant jump. Very nicely done. I tell you what, on that team sheet, it says one as Tyagarajan युवराज, for या the Railways. Yeah, I think he comes across with the block. It does not keep him down. Guman Singh, he's not got the pressure of a do or die raid. He also has a bonus open. Jai Bhim revived with that couple of points, and suddenly Indian Railways are now facing that heat to stay on in the match. और बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको वहां पर त्यागराजन युवराज नजर आते हैं, पर इस बार फिर से नीतीश कुमार जय भगवान को एक और बार शिकार बनाते हुए दिखा रहे हैं कि क्यों ये इतने शानदार डिफेंडर कहलाए जाते हैं। I think he was slow there. Yeah, he slipped also, Jai Bhim, and also slow on the turn. Yeah, there. Yeah, he slipped on the mat. He knows it. He knows it, Jai Bhim. He did not get a good grip on this. And a couple of more points for Railways. Guman Singh has taken off Jwalaram. Wow, that's a big raid. It's a very good defender there, Rashid. He's been taken off. लेफ्ट कवर से अटैक आ रहा था, वहां पर गंगाराम गए थे, पर बहुत ही अच्छा फोर्स का उपयोग किया वहां पर इंडियन रेलवेज के रेडर ने और 2 अंक वहां पर चुराए। राजस्थान 2 अंकों से पिछड़ रहा है, ऑल आउट की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है। महिपाल को टच पॉइंट चाहिए होंगे। राजस्थान बनाम इंडियन रेलवेज, क्या डिफेंडिंग चैंपियंस को, 4 बार के लगातार चैंपियंस को यहां पर राजस्थान बाहर दिखला पाएगी। अभिनीश नटराजन की स्ट्राइक रेट बता रही कि बतौर डिफेंडर उनका कमाल का प्रदर्शन है और इंडियन रेलवेज भी बेहतरीन कार्य कर रही है। Yeah, again, the ankle hold that comes across in a no time from that left cover. Parvesh, he also is a very big player. Parvesh, we've seen him in the franchises as well. It's a super tackle situation now. Pankaj Mohite might not take anything out because he does not want to risk it. Will go back empty-handed. Good thinking. When you have that 3-pointer lead, why do you have to risk something which is not available? As once again Rahul Chaudhary walks in. Yeah, that name itself, isn't it? Of a raider going in, but it's not the Haryana Rahul Chaudhary, it's the Rajasthan's Rahul Chaudhary. उत्तर प्रदेश राहुल चौधरी, वो Yeah, भी correct. निश्चित तौर पर Pradesh. नवीन एक बहुत ही बड़ा नाम राहुल चौधरी, जो कि पोस्टर बॉय, और आपने बहुत सारी कहानियां हमने वहां पर वाईकेएस के प्लेटफॉर्म से आपसे जानी है और किस प्रकार का एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं राहुल चौधरी। बट यहाँ राहुल चौधरी एम्प्टी हैंडेड आए हैं। 10-7 का स्कोर है। अब गुमान सिंह क्या ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे? 3 का हाउस है, अच्छे कॉर्नर्स है राजस्थान के पास भी। आपको वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के तौर पर नजर आते हैं जितेंद्र, एक अच्छे खिलाड़ी है, और देखते हैं कि क्या गुमान सिंह उनकी तरफ अटैक करेंगे। Oh. राइट एंड से राहुल चौधरी अटैक करने गए नवीन, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। Yeah, and also outside the balk line. So much so outside the balk line, you could have gone in and raided the next raid, Rahul Chaudhary. You could have left Guman Singh alone because it would have been a do or die raid the next raid. But now, Brajendra Chaudhary has the pressure of reviving somebody. If here the tackle goes down, it'll just be one player back in the Rajasthan's half. Yeah, good that he goes back empty-handed. Try it out in a super tackle situation. He does not want to try anything here. Just crosses the balk line, attempts one back kick, and then goes back. Parvesh,
He wants to what? No? I thought Parvesh wants to go in. पर अब गुमान सिंह एक अच्छे कद-काठी रेडर हैं, फ्रेंचाइजी लीग में इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखते हैं किसकी तरफ अटैक करेंगे, कि राइट कॉर्नर की तरफ जाएंगे या फिर लेफ्ट कॉर्नर की दिशा में जाएंगे। 55% जो है रेट सक्सेस रेट रहती है वहां पर इंडियन रेलवेज की, और वहीं पर 27% रेट सक्सेस रेट रही है राजस्थान की। तो आज देखते हैं कि कौन सी टीम के रेडर्स किस पर भारी पड़ पाते हैं। 55% नवीन रेट सक्सेस रेट इंडियन रेलवेज की कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि राजस्थान का डिफेंस थोड़ा सा एरर प्रोन रहा है, बट यहाँ डू और डाई रेड है नवीन, एंजॉय कीजिएगा। Nah, totally. Brijendra Chaudhary, at least he'll have to get a bonus. If not, any touch point there. Right corner is waiting for him. And the left corner comes across with the chain. Wow, that's brilliant. Tyagarajan. Amazing, amazing tackle. बेहतरीन नवीन, बेहतरीन। और देखिए ये ट्रैप में फंसाया गया, लेफ्ट कवर जैसे ही पीछे रहे पूरी तरह से एंगल को कट किया गया लेफ्ट कॉर्नर की दिशा से, और पहला ऑल आउट जो है वो राजस्थान को दिया गया है। भारतीय रेलवेज, इंडियन रेलवेज थोड़ा सा बढ़ती हुई आगे की तरफ ऑल आउट देने के पश्चात जय भगवान का रिवाइवल हुआ है, यानी कि जब ऑल इन हुई है तो और रेडर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। राहुल चौधरी, महिपाल को लगातार अच्छा करना पड़ेगा। जय भगवान जिनकी कैपेबिलिटीज है वो दोनों साइड से रेट लगा सकते हैं। क्या परवेज को अटैक करेंगे लेफ्ट कवर के तौर पर? बोनस की कोशिश की है नवीन, क्या बोनस अर्जित कर पाए? इसका निर्णय तो हालांकि रेफरी देंगे। Yeah, correct, but I don't think so because he saw his teammates and yeah, no bonus because he was cutting the bonus line. He saw his teammates and teammates did not also say that there was a bonus there. But all that action gone in, I'll tell you where that all out came. Oh my God, he's claiming the touch. Pankaj Moite, 4 points today on that left corner, and he's not agreeing to that one. Jitendra Yadav, yeah, from that left corner, he was that last player standing in. But I'll tell you what, where the all out came in from, when Gangaram Jwalaram actually was dismissed from the mat. And no point, no point. Is it? Oh, they agree to it. They agree. Left corner should go back. Yeah, I don't think there was probably any touch. If they want to review it, Rajasthan, no, they don't. जीतेंद्र वहां पर बाहर जाते हुए, जीतेंद्र वहां पर बाहर गए हैं तो महिपाल को अब रेड लगाने की जिम्मेदारी मिली है। क्या राइट कॉर्नर की तरफ जाना चाहेंगे? नितेश वहां पर मौजूद मिलते हैं, और आज नितेश ने बहुत ही अच्छे टैकल्स किए। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला है बहुत ही शानदार है। बट जय भगवान की अगर आप स्टेट्स की बात करें, वो समर एडिशन की जिसका हम इंतजार कर रहे थे, 236 पॉइंट्स, 74% स्ट्राइक रेट। नवीन, क्या शानदार स्टेट्स हैं। और अगर आप मुझे मौका दें तो एक इंटरव्यू जो हमने उनका लिया था नवीन, उसमें उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ रेडर का वहां पर तमगा अपने पिताश्री को दिया था। Yeah, fabulous. That's good. And now what is he doing in that left corner? Stand in the center, ask the defenders to do their job, and right cover comes across. Jwalaram. Fabulous work along with Nitin. Yeah, that combination was very good. Nitin Kumar. Bonus, yes. क्या शानदार परफॉर्मेंस। नितिन और गंगाराम की जोड़ी हमने लगातार अरावली एरोज के लिए युवा कबड्डी सीरीज में भी देखी है, और नितिन की भी एक कहानी रही है वो जो कुछ दिनों पेपर में भी बड़ी चर्चाएं में थी कि किस तरह से प्रदर्शन दिखला रहे हैं। बट यहाँ जय भगवान को शिकार बनाना डू और डाई रेड में नवीन, राजस्थान लगातार पिछड़ रहा है, इंडियन रेलवेज आगे बढ़ रहा है। See, they need a do or die raider. In fact, they need an expert, but if not an expert, they at least need someone else to take that pressure. You can't have your premium raider go in. See, that's where I don't approve of that fact. Tyagarajan on that left corner did well, and now, once again, Nitin and Jwalaram, once again from that cover defense, do the magic. जी हाँ, बहुत बढ़िया। जिस तरह से वहां पर गंगाराम ने जो अटैक किया लेफ्ट कवर के तौर पर वो बहुत शानदार था। नितिन का बहुत अच्छा सपोर्ट आया, तो आज कवर जो है इस लीड को अब कवर अप करना चाह रहा है, और 9-18 का जरूर स्कोर है। राहुल चौधरी हल्का से निकल आया, बट आशा करते हैं कि इनके टच पॉइंट्स लाना राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है नवीन। Yeah, and also, Harshit, what the important factor is, I'm shocked why is Jwalaram not raiding? Because Rajasthan need points, no Jay Bhagwan, and he can raid as well because Rahul Chaudhary needs somebody to support him. Rahul Chaudhary there, number 2 there, he's standing without getting involved in the defense, which is good. Ah, Beam! Come on! Once again, he's dismissed because he's attempting a tackle. 2 points here.
पंकज मोहिते देखते कि कहां से वो अटैक आया, सबसे पहले किक लगाने की कोशिश की राइट एंड से नवीन। देखिए ऑलरेडी जो Yeah. पंकज मोहिते का मोमेंटम था वो मिड लाइन की तरफ बढ़ चुका था, तो एक बड़ी चूक वहां पर नजर आई। जय भगवान के साथ में राइट कॉर्नर भी बाहर की दिशा में गए हैं, अब वहां पर महिपाल रेड पर है। क्या बहुत समय के बाद यहां पर टच पॉइंट मिलेगा? जो 9 पर गाड़ी अटकी थी 10 अंकों पर अब स्कोर पहुंचेगा। Yeah, very good running hand touch. Again, he's taken off the dangerous defender Tyagarajan from that left corner. He was being like a big trouble there for Rajasthan. Now the trouble will be off for a while. Surinder Gill, what a lovely toe touch. What happened there? He was just shocked to see that one, Jitendra Yadav. क्या अद्भुत कार्य वहां पर। और नवीन, जिस पेस पे ये मुकाबला चल रहा है, इंडियन रेलवेज के लिए लगातार अंक आ रहे हैं और राजस्थान को मोमेंटम को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लगातार इंडियन रेलवेज को ऐसे अंक देते रहेंगे तो इंडियन रेलवेज एक ऐसी टीम है। जरूर पवन शहरावत इस बार मौजूद नहीं है बतौर कप्तान, बतौर रेडर, क्योंकि चंडीगढ़ का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार एक और टच पॉइंट आता हुआ, रेडर्स को लगातार पॉइंट लाने हैं बट डिफेंस को पॉइंट लूज नहीं करना है। Yeah, and also more importantly, they have that strong storm sitting in the bench. So when that comes out, there's something else happening. And once again, this cover defense is good. Is the defender also gone out? Oh, they're saying Raider safe. Hang on. They were all up in arms, the umpires. Surinder Gill, as he plucked off points in a heap. Oh, it's a super raid. नवीन 3 अंक वहां पर अर्जित कर गए। सुपर रेड वहां पर ये नजर आई है, बहुत ही कमाल की सुपर रेड नजर आई। और जिस कार्य के लिए इस रेडर को जाना जाता है वही किया। बस जय भगवान का रिवाइवल जरूर आया था, क्या अब वो यही कार्य कर सकते हैं जो पंकज मोहिते और साथ ही साथ गुमान सिंह कर रहे हैं? इस बार टच पॉइंट की जरूर वहां पर कामना की है, आशा करते हैं कि जय भगवान को वहां पर टच पॉइंट मिला भी है। और किसका शिकार बनाया? गुमान का शिकार बनाया, यानी कि प्रतिद्वंदी के मेन रेडर का शिकार बनाया है। Yeah, correct. And here, let's see that super raid once again. Did he cross over? No, it was a defender, I think, anti-crossing. Yeah, that's why Surinder Gill got all 3 points. The block was good from Nitin, but he just rolled over against the midline. Jai Bhagwan once again becomes that solo raider there along with Rahul Chaudhary. Yeah, they do have Mahipal, but the only factor is they're using Jwalaram as a full-time defender. The last 4 raids have been really good. Jay wanted to go in, but what is this? Mahipal says, hang on. Let me try something. It's 12 2s are 24. I want points in heap. महिपाल किक लगाने की कोशिश, बहुत बेहतरीन बैक किक वहां पर लगाई और नीतीश को शिकार बनाया है। नवीन, पहली मर्तबा इस मुकाबले में देखिए जिस तरह से बैक किक लगाई वो बहुत ही शानदार थी। And it was only the hand of Nitish Kumar, isn't it? You've always seen in the kicks, it's either the legs, chest, or shoulders of the right corner defenders, but this time it was hands. So that means it was the last minute of the kick that actually got him the touch point. Last second, I should say, last minute second even. Jitendra Yadav in that left corner does not disturb Pankaj Boite. He goes back. Jay, he should understand that each point, or rather each raid, Ashit, it's just not that 1 point. He needs to understand that he needs to bring points, multiple point raids, more importantly. And in the coach, rather in the defense of 5, this will not be easy for him. It goes in deep against that right corner. Probably does not get anything, comes back empty-handed now. राइट कॉर्नर पर अभिनीश नटराजन वहां पर मौजूद थे, तो ज्यादा अंदर जाने की नहीं सोची, ये अच्छी चीज है। अब डिफेंस को यहां पर इनकैश करनी पड़ेगी इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि डू और डाई रेड है। सुरेंद्र गिल यहां पर आएंगे डू और डाई रेड पर। क्या सुरेंद्र गिल ने पहले एंकल को जर्क किया और उसके बाद मिनी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर कितने पॉइंट्स अर्जित कर गए नवीन, काउंट कीजिएगा। My God, I am sure it's another super raid. This time it's a 4-point raid. Surinder Gill. Now, what went wrong was the ankle hold from Yadav in that left corner. Yeah, there you see. He was very casual, I think, Jitendra Yadav. He just kicked that one away, and then Jai Bhagwan also in the mix. Rajasthan now left with Rahul Chaudhary only to revive, man. Ankle hold, that's it, gone. Probably he's got the bonus. And all out. Yes, they've got the bonus point and the second all out, Ashit, already. That's why Indian Railways are so strong, the 4-time champions.
वाओ, जस्ट वाओ। देखिए इस बार पिछली जो सुपर रेट थी नवीन, शायद उसी ने वो पूरी तरह से कार्य कर दिया था। राहुल चौधरी तो जानते थे कि इस बार डिफेंस एक साथ टूटेगा, फिर वहां पर शायद सरेंडर बोनस वहां पर अर्जित कर गया, फिर बहुत अंदर जाके हैंड टच करने की कोशिश की। अब पंकज मोहित रेड पर आए, राइट कवर नितिन और गंगाराम, ये दो डिफेंडर ऐसे हैं जो राजस्थान को मैच में लगातार वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। But I am not too okay with that one. I'll tell you why, Harshit. Because the defense corner should attack first, and then the cover should just provide the cover. That's not happening for Rajasthan. It's the covers who are attacking first, and that's why probably they've just given away a lot of points. So the end of the first half in qualifier number 1, 20 minutes, it's completely belonged to the men with the bogies and engines. Yeah, that's what the progression also sounds like, because yeah, one flat line from 7th to the 12th minute. That's it. Nothing for Rajasthan there. That was the first all out, because if you see that dark green line, it was jumping from that 7 to 10 points. Yeah, that is that all out. And then once again from 11 to, if you see, they're up against that 14th point. Yeah, that's it. Those two all outs. And after that, the last tackle that came in, again, the two all outs, this did not give anything away to Rajasthan to make a big comeback in this. जी हाँ, वापसी करनी पड़ेगी, राजस्थान की टीम को वापसी करनी पड़ेगी। धुरारी धरती कहते हैं आप राजस्थान को, जैसा हमने इंडियन रेलवेज की बात की, भारत की जान है, भारत की शान है। ट्रांसपोर्टेशन की जब जब बात की जाती है, आपको हमेशा पहला ऑप्शन जो दिखता है वो इंडियन रेलवेज दिखता है। और इंडियन रेलवेज कबड्डी में अगर आप देखें तो 4 बार की चैंपियन, राजस्थान भी एक बहुत ही शानदार स्टेट, और बहुत सारे कबड्डी के कमाल प्लेयर्स वहां से आए हैं। बट नवीन, एक बार फिर से हम तारीफ करना चाहेंगे उस टीम की जिस टीम ने हमारे तक यहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट पहुंचाया है, खासकर फैन कोड का और वो सभी दर्शकों का जो लगातार प्रेम, चाहे अहमदनगर में वहां पर मौजूद होकर दे रहे हो। महाराष्ट्र के लिए बहुत सारा सपोर्ट तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की लोकल जो जनता है, होस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, और हमने पिछले मुकाबले महाराष्ट्र के देखा था जिस तरह से दर्शक दीर्घा जो है लगातार वहां पर हंस खेल रही थी, और भी लाखों करोड़ों लोगों तक फैन कोड और यूट्यूब के माध्यम तक मुकाबले को स्ट्रीम किया जा रहा है। Yeah, totally. Thanks so much for all those important hearts who've given us their love. Surinder Gill, 9 rate points. Very good. I said they're struggling in the rating department, Rajasthan. Very clearly, the defense is quite okay with the covers. But look at this, 22 attempts and only 7 conversions. Wow, in the rating department. And look at the other way around. 12 times they've got the points. And that's why that massive, massive lead of like what, 16 points and the 2 all outs is because the Raiders have phenomenally well. And also, don't forget, Tyagarajan from that left corner has put in all those important tackles. Yeah, here's Surinder Gill. सुरेंद्र गिल के आप पैकेज देख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, 2 टचेस बहुत अच्छे से किए। और यहाँ पर वो जो सुपर रेड पहली आई थी, उसके बाद एक और सुपर रेड नवीन हमें नजर आएगी। यहाँ वो जो डुबकी लगाई, पहले एंकल को जर्क किया सही समय पर, जैसे आज मैंने सुबह भी बात की थी कि जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, वैसे ही कोई अगर आदमी घुसकर आता है, और वही गेट क्लोज होने वाला था डिफेंडर्स की तरफ से, बट उतने ही समय में सुरेंद्र गिल ने हल्की सी डुबकी लगाई और मिनी डुबकी ने उन्हें मेजर पॉइंट्स दिए। Yeah, no doubt. And once again, Nitish Kumar from that right corner. Yeah, he's been equally supported by Tyagarajan, I should say. But he's got those 4 tackle points. He's got Rahul Chaudhary, Mahipal, and Jai Bhim. All 3 of them. Ashit, I know this is the Nationals, and if you really want to talk about that Hage Karasta here for the Rajasthan team to make a comeback against the strong, strong Railways, I'll tell you what, all 4 should rate. Jai Bhim, Mahipal, Rahul Chaudhary and Jwalaram. All of them. Gangaram also should start rating. If not, it's not going to work out for them, because it's so important that you keep the pressure on. And yeah, every action is live and exclusive also on Fan Code as always. They've been a big backbone for us in taking this to the entire world. Right. Jai Bhagwan. डेफिनेटली। What's he got now? और नवीन, क्योंकि आपने वहां पर गंगाराम की बात की है, युवा कबड्डी सीरीज में गंगाराम ने जो परफॉर्मेंस दर्शाया वो बहुत ही शानदार रहा है, और उन्होंने रेडर के तौर पर बहुत अच्छी किक्स लगाई है, जूडो कराटे की किक्स वहां पर नजर आई है। और अभी युवा कबड्डी सीरीज का केएमपी वाईकेएस भी जारी है, जिसे आप फैन कोड पर बहुत सारा समर्थन देकर देख रहे हैं। जय भगवान ने इस बार बुलडोज किया, ये है इनकी भीम शक्ति, जिसके लिए आप उन्हें भीम बुलाते हैं नवीन।
Totally, no doubt. And once again, there he wanted to attack Parvez, but then the left corner came across. But Harshit, if you see what's ankle hold once again. Surinder Gill now needs to go back. Rajasthan finally with Yadav's big ankle hold coming across. जी हाँ, बहुत बढ़िया अटैक वहां पर जितेंद्र की तरफ से आता हुआ लेफ्ट कॉर्नर से पहली मर्तबा हमने कॉर्नर को वहां पर पॉइंट मिलते हुए देखा है नवीन. Yeah, I was just saying here, Ashit, now just imagine when Jay comes in, the defense knows not to attack him because he can be a raider who will get multiple raid points. And that is what they need to do, Rajasthan, when Surinder Gill comes on. That is what they're not been able to perform here. That is not what you want to do. As Gumman Singh, after a very long time, has come in. He's got the bonus. I think, yeah, it looked very clear on the bonus line. That big leap and jump also. Maybe a celebration of the bonus point. But when Jay has gone in, yeah, that's a confirmation of the bonus. If you see his last 5 raids, or 6 raids even, oh, that's a good hand touch. Rahul Chaudhary goes in, attacks, I think, Parvesh first on that left corner. अच्छा, परवेश पर भी शिकार बनाया और 2 खिलाड़ियों को वहां पर अर्जित करके टच करके डैश करने की नीतीश ने कोशिश की, तो नीतीश और परवेश को बाहर करना ये इंडियन रेलवेज को ऑल आउट का धमाके देना जैसा होगा. इस बार राइट कॉर्नर ने, पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया था, तो राइट कॉर्नर ने इस बार किया और लेफ्ट कवर का सही साथ नवीन. Yeah, very well done. They're reducing players, and that's the first all out. Rajasthan has inflicted the all out on Indian Railways. This is not very good for the Railways. They have not been known to allow the opponents to make a big comeback. Pankaj Mohite comes in, and yeah, I was just saying, the defense of Indian Railways is very intelligently just giving 1 point to Jai Bhim. That's all. They know that this raider can bring points in heaps. What was Pankaj Mohite doing? He was blinded. The covers once again of Rajasthan doing the magic. क्या बात है. परेशान हो गए थे पंकज मोहिते, थोड़ी सी बैक दिखा दी थी लेफ्ट कॉर्नर को, लेफ्ट कवर को, और उसी समय पर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना. राइट कॉर्नर भी अटैक करने आया तो लेफ्ट कॉर्नर ने भी वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखलाया. जय भगवान रेड पर है, क्या इस बार हैंड लाइन मिड लाइन के पास जा पाएगा? टैंगलिंग हैंड का टेक किया गया नवीन, रिस्की टैकल था. Yeah, totally risky because he could not break that chain from that right corner and right in. The chain tackle, keeping the biggest raider down. They're still fighting very nicely, Rajasthan, I should say that, against the defending champions, because it's not easy. They can make you sweat every second. I think he's just showing his footwork and he will go back, I'm sure. He's not trying to get a point here. He's just trying to lower the defense with him. Gumman Singh. Yeah, goes back empty-handed. बिल्कुल सिर्फ बोनस चुराने दे रहा है. राजस्थान का जो डिफेंस है वो सिर्फ बोनस टच पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहता. ये बहुत बढ़िया है. महीपाल इस बार रेड पर गए हैं, बट इस बार बैक उन्होंने भी दिखा दी थी. जो पंकज मोहिते ने गलती की थी वही गलती शायद इस बार महीपाल दोहराते हुए नजर आए, और इसीलिए 1 पॉइंट जो इंडियन रेलवेज को मिला है. Yeah, correct. Don't show the back on a kabaddi mat and in the borders of our country. Yeah, that's where you should not be showing the back at all. Indian Railways still having the lead across, but Harshit, in Pool A, if we can just go back and talk about this, Indian Railways had a score difference of plus 49, topping that pool. And that is where they're so good. Pankaj Mohite once again. Why are they traveling in so deep? And why are they giving the options to the defense of Rajasthan? पर पंकज मोहिते थोड़ा सा नर्वस क्या नजर आ रहे हैं. हालांकि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बट फिर से देखिए कॉम्बिनेशन नवीन, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर जिस तरह से अटैक करते हुए नजर आए वो बहुत ही शानदार था. जय भगवान जो है दोनों दिशाओं में अटैक करते हैं, दोनों दिशाओं से वो रेड लगा सकते हैं. बहुत ही उज्जवल खिलाड़ी है. और जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था नवीन, उस इंटरव्यू की तरफ वापस दर्शकों का जो है थोड़ा सा संदेह और संदेश चाहूंगा. एक और टच पॉइंट वहां पर मिलता हुआ. Yeah, it was not right. It was not right from Abhinesh. Should have just stayed back. I think there's an official timeout that's been taken. Right, Ashit, I think you will have time to explain on that story.
तो नवीन, हम युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन में जय भगवान को जब सर्वश्रेष्ठ रीडर का अवार्ड मिला, तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़ा इमोशनली, जो कुछ ही समय पहले उनके पिताजी जो इस जीवन में हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा कबड्डी के लिए बहुत मोटिवेट किया करते थे, और मैं ये सर्वश्रेष्ठ रीडर का जो अवार्ड है उस मुकाबले का उन्हें डेडिकेट करना चाहूंगा, और आशा करता हूँ कि वो जहां कहीं भी होंगे मेरे इस परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत खुश होंगे। और मैं युवा कबड्डी सीरीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वहां वो अपनी प्रतिभा दर्शा सकते हैं। Yeah, absolutely. Very, very well spoken there by Jay Bhim. Very emotional. He looks tough. He looks heavy built. But he is very emotional. Spoken to him so much. As Surinder Gill now will go back empty handed. Yeah, in that pool A, I'll tell you what. Jay Bhim, remembering his father. Yeah, of course, I've never spoken about my father here, but I'll tell you why I'm bringing this up. Of course, my father is hale and healthy, thankfully. BSNL, if you see that in Pool A, Indian Railways, Madhya Pradesh, and BSNL, my father was a senior engineer in BSNL. Whoa, wow, Naveen. Of course, he did play kabaddi. He's retired. I am the only sports person in the house. But yeah, that's a nice ankle hold on Jai Bhim. Fabulous. He just went into kick. But yeah, the attack on that right corner was really good on the ankle hold. Yeah, I was so happy to see that logo out. I'll show my father once. But yeah, Guman Singh Arshit, I think it's been dashed out. Or are they counting men? Are they counting the players? It's a dash. That's what they are trying to say. Rajasthan, they will discuss it out with others as well. Yeah, read it out maybe. Yeah. Oh, Read it जी out. This बिल्कुल side, बेटर sir. आउट। Yes. Yeah. बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा अटैच आया, नितिन कुमार वहां पर क्या अटैक करने गए थे, अच्छी तरह से राइट कवर से आगे की तरफ जाते हुए नजर आए, और एक अच्छा अंक जो है वहां पर मिलता हुआ नजर आया। महिपाल वहां पर मौजूद थे कवर के डिफेंडर के तौर पर। सिर्फ 7 अंकों की बढ़त है अभी इंडियन रेलवेज के पास, बहुत बड़ी बढ़त आप कहते नहीं नवीन। और जो आपका फॉर्मूला है कि 3 रेड में Oi. मुकाबला कहां से कहां हो जाता है, 7 रेड से अब शायद जो अंतर है वो 4 या 5 का रह जाएगा। 2 पॉइंट तो कंफर्म है। Nice escape. Very well done. See, first Parvez kept himself out, but then wanted to attack it when it was not a right time to attack. And then that also brought in the other defender from that right corner. Yeah, Surinder Gill. Yeah, something to do. Oh, God. Oh, he's not going to touch. He's not going to touch. The chain was broken. And he will still try to cross the midline using the lobby and his height. They're still trying to count men. They're trying to discuss it out. The umpires have a big responsibility of controlling the players first. Wait, hang on. There's the card. He's searching for the card. Just be careful. He's not happy with the decision. He's very disappointed, of course, with the decision first on that right corner. Each 1 point. That's it. I was thinking it was a multiple point discussion. ऐसा लगा था, पर क्या डिफेंडर वहां पर पूरी तरह से डैश करते हुए वहां पर बाहर चले गए थे। एक पैर, एक दफे के लिए हल्का सा पैर उनका उठा था नवीन, और रेफरी का ये कहना 1 ईच पॉइंट। पर अब सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, जय भगवान को ध्यान देना होगा इस सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में। नवीन, हम कहने ही वाले थे कि यहाँ जय भगवान का शिकार बनाया गया। 2 पॉइंट इंडियन रेलवेज को दिए। Arshit, he does not have a skill of turning towards the lobby. That's all. He can bulldoze the defenders. He can confuse the defense with their movement. But yeah, look at this. Look at this. Just imagine if you had turned towards the left. And that's why I always see, I know it's okay. It's okay when you can raid from both sides, as you say. Jay Bhagwan is a good raider. But naturally, he's a right raider. That's all. You go say David Warner to bat right-handed right from the first ball, he won't do it. David Warner is a left-hander. Simple. He can play 1 or 2 balls as a reverse shot that has been executed nicely. That's all. See, Jay Bhagwan in a super tackle situation should not have tried that left-sided raid. He's not a natural left raider. As Tyagarajan has got his high-fi. Very good from that left corner. And nothing there, he goes back. So he needs to understand where to unleash the talent. And as David Warner picks the ball to hit on the reverse, he should understand where to unleash his left trading skills. Jai Bhagwan.
बिल्कुल नवीन, और इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। बट नवीन, क्योंकि 10 मिनट के आसपास का समय शेष बचा और इंडियन रेलवेज के ज्यादा रेडर्स को पॉइंट्स मिले नहीं है। गुमान सिंह जरूर शुरुआत में बहुत अच्छा करते हुए नजर आए, सुरेंद्र गिल को पॉइंट्स मिले, पर पंकज मोहिते का लगातार शिकार बनाया है। तो क्या अहमदनगर में अब स्टॉर्म आ सकता है, यानी कि क्या इंडियन रेलवेज के लिए अब यहाँ पर जो है वो सुधाकर को हम देख सकते हैं? हमने उनके स्टैट्स देखे कि कितने कमाल के उनके स्टैट्स हैं, तो क्या उनका एक बिग ऑफ रेडर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है? बट ये एक डू और डाई रेड है, पंकज मोहिते रेड पर हैं। देखते हैं कि क्या पंकज को पॉइंट मिलेगा। एक और बार लगातार नवीन, तीसरी या चौथी बार लगातार पंकज मोहिते को शिकार बनाया गया है। Yeah, nice ankle hold from that right corner. Nitin does really well. He backtrails, gives Pankaj the angle to come in, and then attacks him inside the bonus line. That's very good. It's a do or die raid now. It's a super tackle situation as well. Yeah, Stormy Sudhakar, you're talking about him. Last match, he did score 7 raid points. Yeah, there is chances. If such things happen, it's a super tackle. Rajasthan have given away 2 extra points. This is not what they wanted. Yeah, you speak of Sudhakar, super tackle. Yes, a man revived. Brilliant dash. त्यागराजन ऑलरेडी हाई फाइव बना चुके थे। क्या ये भी टैकल्स अगर उनके खाते में गया तो बहुत ही कमाल का वो प्रदर्शन दिखला रहे। 7 टैकल पॉइंट्स मेरे मुताबिक, शायद अगर वो पिछला सुपर टैकल उनके साथ हो तो हो चुके होंगे। नवीन, बात चलिए, हम बात कर रहे थे क्यों हम सुधाकर के बारे में इतनी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल उनके वाईकेएस के स्टैट्स देखे थे, हमने उनके प्रो कबड्डी के वहां पर फ्रेंचाइजी के स्टैट्स देखे थे, तो वहां पर भी उन्होंने 100 प्लस पॉइंट्स अर्जित किए थे। और वाईकेएस में तो जो उन्होंने डुबकीज लगाई है, जिस प्रकार से वो स्टॉर्म लेकर आए, वो बिल्कुल अकथनीय है, अविश्वसनीय, प्रशंसनीय है। बट यहाँ 4 का हाउस है। अब क्या यहाँ रेडर राहुल चौधरी जो है कुछ कमाल कर पाएंगे? महिपाल लेफ्ट रेडर है, राहुल चौधरी लेफ्ट रेडर है, बट इस बार लेफ्ट रेडर ने राइट टाइम पर राइट काम कर दिया है। Yeah, and the dash was not right. See, he was not in a proper position. He was sitting down on that right corner. Then he had to get up, come in for the dash. He did not have the proper dash. Right. We know this, coach. सोहनलाल जी, Yeah. He was there in the JSG Women's Yuva Kabaddi series as well. I think he was coaching the Rajasthan side there as well. He was, I think, the Aravali Arrows. अरावली एरोज को बहुत बार कोचिंग दी है। सब्स्टिट्यूशन में हल्का सा बदलाव हुआ है, चिटलाता न वहां पर मौजूद है। इंडियन रेलवेज के खिलाड़ियों को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातचीत बता रहे हैं। किस खिलाड़ी को हम आप अंदर आते हुए देखेंगे? 11 नंबर जर्सी जो है वो यहाँ पर अंदर आए, यानी कि सुनील सुनील वहां पर अंदर आए हैं। नवीन, ये भी एक अनुभवी डिफेंडर हैं, क्योंकि सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है तो इंडियन रेलवेज ने दाव खेला, हैट्रिक अपनाई है। सुनील और परवेज वहां पर क्या शायद अंदर नजर आ सकते हैं, बट अभी गुमान एंकल पर क्या गिरफ्त बना पाए हैं, क्या डैंगलिंग हैंड का टेक कर पाए हैं नवीन? और अगर ऐसा है तो राजस्थान फिर से डंके की चोट पर मैच में वापस आया है। Fabulous. They've announced their comeback, and now Jay Bhagwan, he wants to clean this up. 2 good defenders, Parvez and Sunil. He should not be too greedy. If she can go in and attack Sunil on the running hand, that'd be really nice. Not against Pankaj. Don't turn left. Oh, there, finally. Somehow, he's just got 1 point. Stop turning left, Jay Bhim. You're not a left raider. You should have just gone in with the running hand touch, Ashit. And thankfully, see, if imagine Parvez shouldn't have attacked him. He would have gone empty-handed. Wow, who do we see? The Storm is in the house. Ankle hold, and this was a proper tackle. Cherlatan, Dharmaraj Cherlatan, the coach, of course, of Indian Railways, brings the Tamil boy on. And there, this is the last player standing, 328 points. Phenomenal record. Just in one edition. Just that winter edition that happened there in Puducherry. 415 rates. Look at the bonus points. 50 bonus points. 217 touch points. Now, out of those all, he just needs 1 touch point now to save the Indian Railways from the second all-out. Stormy comes in. First rate. Bonus point. And then, very easily, they're giving him the bonus away. He's just thanked the heavens for the big chance that he's got. Once again, yesterday, 7 8 points. And here, Rashid, I don't think so. He can make it. Oh, has he? Has he? Stormy has struck in the nationals as well. The big jump comes across. From where do he find
all those escape routes. He's also asking for the bonus. Yes, it's a bonus +3. It's a 4-point raid. Definitely bonus, yes. It's a super duper raid. I am not able to control my emotions here, Rashid. इसे कहते हैं मौके पर चौका, पहले जंप लगाई और उसके बाद वो डुबकी आई। नवीन, ये लीजिए, ये डुबकी का प्रिंस है, ये मास्टर है। पहले जंप लगाई थी और उसके बाद मिनी डुबकी नजर आई। इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। बोनस +3 टच पॉइंट लेकर आना। जय भगवान कह रहे हैं कि मैंने यहां पर एक टच पॉइंट अर्जित किया है। रेफरीज कह रहे हैं कि हम यहाँ के बॉस हैं, हमें निर्णय लेने दीजिए। जिस खिलाड़ी को बाहर बोला जाएगा उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। पर नवीन, इस 3 नंबर जर्सी ने, सुधाकर ने क्या सेंसेशनल परफॉर्मेंस दिखलाई है। Just not enough. It is probably super sensational and also super elated performance. Once again, he comes on in, and nice to see that he's got fitter and fitter. He was very lean when we saw him first, and now he's added on a little more muscles. Remember, as a raider, we were just telling him that he needs to get a little more bulkier for that dash to be avoided, for that bulldozing escapes. I think he's just added on a little weight. That's all. 1 point only. 1 point only from that right corner. Can we see the replay, if possible, of Stormy saving the Indian Railways? Bonus +3. If we have time, we can slot it in. पर नवीन, एक और बार वो काम करना पड़ेगा, एक और बार वो काम करना पड़ेगा। 5 मिनट के आसपास का समय शेष है। एक टच पॉइंट और। इसे कहते हैं स्मार्टनेस, इसे कहते हैं एजिलिटी, इसे कहते हैं कि बल के साथ साथ दिमाग का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। जोश, जज्बा, जुनून के साथ जहन का उपयोग कहते हैं नवीन आप। Totally, it's the Jahanish raid that's really is doing the trick for Stormy. Jai Bhagwan, block, another. Hang on. Raider has crossed the midline. He's safe. Couple of points. Oh my God. Once again. Jai Bhim versus Stormy. This is match has gone now in that direction. नवीन, मैं तो कहूंगा 2 युवा खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। एक तरफ एक समर एडिशन के वहां पर एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने वहां परचम लहराया था, तो दूसरी तरफ विंटर एडिशन के। दोनों अपोजिट हैं। समर का महीना विंटर से अपोजिट है, और वैसे ही यहां पर चीर प्रतिद्वंदी हैं 2 खिलाड़ी, जय भगवान और सुधाकर। पर इस बार शिकार बनाया गया सुधाकर का। Oh my God, I'll tell you what, Arshid. Jai Bhim has done something very, very unusual. He's got the bonus point. Sudhakar did not see Jai Bhim was standing in front of the midline. Look at Jai Bhim from that left corner. He went under the chain. As a defender, he just covered himself behind the chain. Jai Bhim, my God. Now, do we have a Kabaddi Kamal moment in this Nationals? That is the highest point of Jahan. To stop the storm, you don't have to have a big bucket. Just a tap closure was enough. Surinder Gill, couple of more points here. And Jai Bhim just closed the tap. That's it. Storm is back on the bench. देखिए, ऐसे बड़े मुकाबलों में आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, और इस बार सुरेंद्र ने वही आउट ऑफ द बॉक्स काम किया। अच्छी डुबकी लगाई। जानते थे कि राइट कवर अटैक करने आएंगे, नितिन और गंगाराम एक साथ अटैक करने गए, क्योंकि पॉइंट चाहिए लगातार अंतराल पर। 3 मिनट से कम का समय शेष बचा है नवीन, और जो लीड है वो 6 अंकों की पहुंच चुकी है इंडियन रेलवेज के पास। इस बार क्या एक टच पॉइंट है? क्या फिर से नीतीश को शिकार बनाया गया है? अच्छा पॉइंट अर्जित करते हुए नवीन, क्या लगता है आगे का रास्ता क्या कुछ हो सकता है राजस्थान के लिए? क्या मैच में वापस आ सकती है? Now there's a possibility, because Stormy has been revived with a touch point. I'll tell you what, whatever the result of this match, of course it's a qualifier, I know, shouldn't be saying that. Both prodigies of Yuva Kabaddi series have done phenomenally well. Diving ankle hold, Sudhakar, generally does not struggle. We've seen this as well, isn't it? He is not a very, a raider who will struggle a lot. There, just gives up. That's okay. But he struggles. He goes through.
ये ब्रूचवल है नवीन, ये भीम है, ये अपने आप में विशेष है। संदेश दिया इंडियन रेलवेज को, ऊपर से गए चेन के। अक्सर खिलाड़ी होते हैं डुबकी लगाते हैं, बट इन्हें पता था कि चेन लो है, तो चेन के ऊपर से जाते हुए नजर आए। अब सिर्फ 2 अंकों का अंतर बचा है नवीन, अभी से हाथ थोड़े से कांपने लगे हैं, जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट आने लगे हैं। 2 अंकों का अंतर, राजस्थान क्या मैच में वापस आ रहा है, आ चुका है नवीन। खतरे की घंटी दोनों टीमों के लिए बराबर है अब। Wow, what an ankle hold from that left corner. Yeah, did not even need that support coming in. But I still am not able to come out of Jay Beams' biggest Jahan moment. He's gone in a super tackle situation. He's trying to attack that right corner. Super tackle has it been successful. Jay Beam will keep struggling. Bandages off. He's trying to kick off the defender. Now, where is the green card for him kicking the defender? He says he's gone out of the lobby. It's a super tackle. What a way. 2 points here for Indian Railways. They have made a big bounce of a comeback. क्या डाई वाई राइट कॉर्नर से, और उसके बाद नितेश ने लगातार जो है डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की। जय भगवान ने पूरी तरह से स्ट्रगल वहां पर किया, पूरी तरह से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की। अंततः आते आते निकले जरूर थे, पर तब तक वो विसल बच चुकी थी। बहुत ही बढ़िया सुपर टैकल, और मैच क्या बन चुका है नवीन। जरूर 3 अंकों का अंतर है, यहां पर कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन की आवश्यकता है, बट पंकज मोहिते जो है वो सिर्फ मिड लाइन के पास ही खड़े हैं। Yeah, that's more than enough, isn't it? Now, for me, the match turner is that super tackle. Another single point only. So, this is not any which way is going towards Rajasthan. Indian Railways, I think, have qualified in this qualifier number 1. They've gone in. He's crossed the back line very nicely, Pankaj Moite. That's it. It's all over. It's because of that one big super raid. Bonus +3 from Stromy and that super tackle that happened. Jai Bhagwan gave his life, Harshit, to escape that super tackle. Was not enough though. Ankle hold, 51 for Indian Railways. They qualify. जी, क्वार्टर फाइनल नंबर 1 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बनती हुई फिर से 4 बार की जरूर अभी भी अंतिम विसल बजना शेष क्या बचा है। जय भगवान, आपने अपनी जी जान लगाई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की यहां पर हार नहीं होती। क्या कुछ अभी भी शेष बचा है नवीन? They're saying timeout and all. I think the 40 minutes has gone in. What is happening here? Jai Bhim is saying there is something else left. Yeah, now the timing judge, the timing umpire comes in. They say there is still time. They say there is still time. The clock has run down 40 minutes. Sohan Lal, the coach, has taken a timeout here. What is happening? Think probably one last raid. That's okay. You just stand near the midline. That's fine, Pankaj Moite. Even if you don't cross the walk line, even if it's 1 point, that's okay. They have stretched away from the 40th minute. Hey, that is supposedly to be happening when there was a tie, no? We were just talking about what are the tie pointers. It's not a tie. It's clock down. Yeah, that's okay. That's fine. 50 for Rajasthan. That's okay. Even couple of points, is it? Match over. That's it. Indian Railways with 2 points, and they finally do qualify. Wow. 53. Right. We just wanted to say the balk line would have been considered as a bonus line if there was a tie. But they have qualified now for the next semi-finals. Stromy Sudhakar and that super tackle. Those are the 2 match-turning, match-winning moments here for Indian Railways, Arshit. बिल्कुल, और राजस्थान के लिए सिर्फ वहां पर जय भगवान एक तरफा लड़ते हुए नजर आए। क्या एनर्जी दिखाई वहां पर। कहते हैं ना कि आप धरती को अगर बारिश से मुलाकात करनी होती है तो लगातार उन्हें धूप में चलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। और जिस तरह से वहां पर लगातार दोनों पैरों पर दौड़ते हुए नजर आए जय भगवान, वो बहुत ही शानदार था। बट एक दफे के लिए सुधाकर मैदान में आए, वो 3+ बोनस यानी कि 4 अंकों की जो रेड लगाई, उसने कहीं ना कहीं राजस्थान के अरमान पर थोड़ा सा पानी फेरा। स्टिल डिस्कशन थोड़ा सा जारी है यहां पर, बट इंडियन रेलवेज आधिकारिक घोषणा अभी ये आई है कि ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया है और अपने नाम किया है, और पहली टीम क्या बनती हुई नजर आई है जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है नवीन।
My God. Yeah, this raid bonus +3. He was the last player and he came in from the bench. He created this storm in the Rajasthan's half. And that's why we call him Stormy Sudhakar, because he can create big storm on the opposition's mat. And then that super tackle. Now let's also slot that in. The super tackle was much necessary to go ahead and seal that one. You saw what actually was happening there. Abhinesh Natarajan, again with a diving double ankle hold. Jai Bhim was kicking away. His bandage came off. He was kicking Abhinesh there. And then he made sure he pushes him off the lobby. That's all. That's all. He says the other defender, fine, relax, cool. Throw his bandage away. He's outside the lobby. और नवीन, मुझे वो सूर्य कुमार यादव के वो स्टेप याद आ गए, और अभी बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के लिए जो WPL में हुआ वो भी मुझे याद आया। और अभिनीश ने कहा कि रुकिए जनाब, अभी ये मुकाबला अभी नजर आएगा हमारे पक्ष में जाते हुए, और बिल्कुल वैसा ही नजर आया। और आइए अगर आप ओवरऑल स्टेट्स की बात करें तो देखिए कहां पर अंतर रहा, कोई खासा अंतर नहीं रहा। रेडर के लिए 3 अंक एक्स्ट्रा आए और मुझे लगता है वो सुधाकर के 3 एक्स्ट्रा अंक थे, बट जय भगवान एडी से लेकर चोटी तक का दम इन्होंने लगाया। फ्रॉम द पिनाकल टू द बॉटम इन्होंने अपना दम लगाया। 18 रेड पॉइंट्स अकेले लेकर आए राजस्थान के लिए 29 पॉइंट्स में से। Fabulous. Wow. What a first qualifier number 1 here, the quarterfinals. Just out of this world. And here in the nationals, this you just can't believe that Indian Railways were almost eliminated the defending champions. The 4-time defending champions sneaking past because of I can probably shout the throat out and say Yuva Kabaddi series is fined to Kabaddi. It's a big find, just not of the season. It's a find and a big contribution to Kabaddi because of Stormy. Yeah, Jai Bhim also he did well. Of course, he's also a find of Yuva Kabaddi series. Don't forget that. या समर एडिशन की ये फाइंड है, विंटर एडिशन की सुधाकर फाइंड है। तो आज जिस तरह से बिल्कुल नवीन कहना बनता है, और पंकज मोहिते को चलने का मौका नहीं दिया, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। बट जय भगवान के रेडिंग कैपेबिलिटीज पर जिस तरह से आप देखते हैं वो बहुत ही शानदार था। 18 रेड पॉइंट, 24 रेड उन्होंने लगाई और हर स्किल का यूज किया। दोनों साइड से इन्होंने रेड लगाई, बहुत ही अच्छे हैंड टचेस किए, कुछ अच्छी जंप्स उनकी नजर आई, और टर्न जरूर थोड़ी सी कम की, बट जब आवश्यकता थी मैच को टर्न अराउंड जरूर किया नवीन इन्होंने। Yeah, that is there. He was the only lone fighter. See, Arshit, again, when he goes towards that left side, he forgets to turn. You see, even in the super tackle situation, where he was tackled out, where that double diving ankle hold came in from Abhinesh, if he could have kicked him and turned around, it would have been nice, but not to be. Right. Yeah, Tyagarajan. This lad deserves everything. But for me, the most impressive defender is Natarajan. Not Tyagarajan for sure. He did well in that cover defense. And what is Anna Cherlatan done is he's filled the defense of Indian Railways with his own replicas. He's made sure the defense in the covers and the corners are very correct, because Dharmaraj Cherlatan, he is a very good defender himself, the left corner. But then now with the corners and covers being very strong, you saw Jay Bhagwan being tackled. The thrice is not easy. Maipal and Brijendra Chaudhary, yes. But if you need to tackle Jay Bhagwan thrice, then you definitely deserve the Best Defender award. बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। उत्कृष्ट ये मुकाबला था और बहुत ही बढ़िया अंदाज में यहाँ पर दोनों ही टीमें खेलती हुई नजर आई है। देखिए नवीन, फिर से कहना पड़ेगा, जीते कोई भी जीतेगा यहाँ पर कबड्डी ही। एक बार फिर से भारत का महानतम खेल जो विश्व भर में अपना परचम लहरा रहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने आप सभी तक ये मुकाबला पहुंचाया। हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर का हम धन्यवाद करेंगे और सभी का धन्यवाद करेंगे, खासकर उस टीम को नवीन धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी शानदार अंदाज से ब्रॉडकास्ट करते हुए यहां तक वो लाखों करोड़ों दर्शक तक वो स्ट्रीम पहुंचाई और वो स्टेज पहुंचाए। पहली मर्तबा हमने ऐसा सीनियर नेशनल में देखा है। Yeah, that's why the 70th Senior National Kabaddi has just gone multiple folds above. I think we need to keep on doing this more and more. Yeah, I would urge the Yuva Kabaddi series think tank, everybody, the stakeholders, to understand the importance of this, to pick up this game
especially in the junior nationals, the senior nationals, the state association run tournaments, to put our heart and soul there. And that was Stromy Sudhakar once again. The winning or the match saving moment was that. Here, this was a winning moment. uh, Natarajan, fabulous, fabulous work. And see, Harshit, if he could have turned and used the lobbies, that was what I was indicating at. But I loved what Natarajan did. He says, enough. He's just gone out of the lobby. Don't worry. Wow. Thank you so much once again. And let's not forget Fan Code, who's gone ahead and shown this match to the world. As always, complete backbone and a big support from the entire team. I'm Navin Chaudhary alongside with Harshit Sharma signing off. See you tomorrow as well. And until then, take good care of yourself and have a good night's sleep. Thank you, Harshit. Thanks a lot for everybody watching. Good night.